और इसको सुन के ऑजिमैंडियस को सुन के लगता है कि व्हाट इज दिस, किस चीज का नाम है ये. So the subject of this poem is a statue of a Egyptian king named Ramses the Second. जो ये पोएम लिखी गई है, ये जो सोनेट्स लिखी गई है, ये किसके ऊपर लिखी गई है? किंग रैमसेस द सेकंड, नॉट अपॉन द किंग बट अ स्टैचू. स्टैचू का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टैचू? मूर्ति. मूर्ति. ठीक है. सो a very huge statue which is built of, किसकी स्टैचू है ये? Of King Ramses the Second. Now King Ramses the Second, he was an Egyptian king. ठीक है. And the name of Ramses in Greek language is Ozymandias. ठीक है. लेकिन ग्रीक कल्चर में जो है रैमसेस द सेकंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑजिमैंडियस. इसीलिए जो है इस पोएम का नाम क्या है? ऑजिमैंडियस. Now the premise of the poem is this, that Shelley had met a friend of his, एक फ्रेंड था शेली का, and he was a traveler. A traveler is a person who keeps on traveling from one place to another. है ना, जो इधर उधर घूमता रहता है, जिससे घूमने का शौक होता है ना. So he had a friend who was a traveler, Shelley's friend, and he had come after visiting an exotic land. Exotic means समथिंग विच इज, आप लोग ये वर्ड नोट करो, EXOTIC. ये हम साइंस के जो है कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं, एक्सोटिक स्पीशीज, एक्सोटिक लैंड्स. ठीक है. आई हैव रिटन इट इन द चैट बॉक्स, EXOTIC, exotic. So he had written from an exotic land and that land is probably Egypt. तो कहाँ घूम के आया है जो शेली का फ्रेंड है? इजिप्ट में. नाउ शेली हैज नॉट सीन दिस स्टैचू. द फ्रेंड ऑफ हिज हु इज अ ट्रैवलर, he gives a very vivid description of this statue to Shelley. शेली ने ये स्टैचू नहीं देखा, लेकिन जो है शेली को स्टैचू के बारे में किससे पता चला? अपने फ्रेंड से, जो कि अभी अभी इजिप्ट घूम के आया था. एंड बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन जो है, वेरी नॉट अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन बट अ वेरी enticing description was given by his friend. उसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया स्टैचू का? कि इट इज प्लेस्ड इन अ डेजर्ट. चारों तरफ क्या है? डेजर्ट है. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. ठीक है. आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ सैंड दिखेगी. एंड इन द मिडल ऑफ दिस डेजर्ट there is a pedestal. वो होता है, अगर आप देखो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है ना, जिसपे कि स्टैचू को प्लेस किया जाता है ना. सो देयर इज अ पेडिस्टल एंड ऑन दिस पेडिस्टल देयर आर 2 legs. जो पेडिस्टल है उस पे क्या है? 2 पैर बने हुए हैं. इट वाज अ स्टैचू. वो पहले के जमाने में क्या था, बहुत पुराने टाइम में क्या था, एक पूरा स्टैचू था किंग रैमसेस का. लेकिन अब क्या हो गया? वो टूट गया है. इट हैज बीन ब्रोकन एंड ओनली, कोई कुछ कह रहा है? एंड ओनली द लेग्स आर रिमेनिंग ऑन द पेडिस्टल. जिस पेडिस्टल पे कभी पूरा स्टैचू हुआ करता था, वो क्या हो गया है? वो टाइम के साथ जो है क्या हो गया है? टूट गया है. और उस पे क्या है? सिर्फ 2 पैर दिख रहे हैं. और अगर आप थोड़ी दूर जाओ तो जो है जमीन में रेत के अंदर दबा हुआ आपको क्या दिखेगा? अ फेस, द हेड ऑफ द स्टैचू. जो हेड है स्टैचू का, वो जो है नीचे जमीन पे गिर गया है, रेत में दब गया है, और आपको जो है वो थोड़ी दूर पड़ा हुआ दिखेगा. ठीक है. नाउ द मिडिल बॉडी इज गॉन. टाइम के साथ जो है वो भी टूट के कहीं गिरी होगी, उसके भी पीसेस हो गए होंगे. नाउ इट इज बेरिड इन द सैंड. वो जो है सैंड में दबी हुई है. सो इट इज अ वेरी वियर्ड साइट. A broken statue, a face and 2 legs in the middle of a डेजर्ट. ठीक है. जहां पे कुछ नहीं है, वहां पे एक स्टैचू है जो कि टूटा हुआ है. एंड इट इज अ ह्यूज स्टैचू. आप अपनी हाइट से भी, आपकी हाइट से भी डबल जो है
इतना बड़ा स्टैचू है, किसी ने बहुत मेहनत से बनाया होगा एंड इंडिकेट्स कि कभी वहां पे सिविलाइजेशन रहा होगा, कभी वहां पे लोग रहते होंगे। एंड देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पेडिस्टल, जिस पेडिस्टल पे जो है वो स्टैचू प्लेस्ड है उसमें जो है एक इंस्क्रिप्शन है। तो वो इंस्क्रिप्शन क्या है ये हम पोएम में पढ़ेंगे, बट लेट मी शो यू द स्टैचू जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट द पोएम इज अबाउट। आप लोगों ने इजिप्शियन फेरोज देखे हैं, स्फिंक्स और वो सब जो पिरामिड्स में जो वो होता है ना, द काइंड ऑफ स्टैचूज। So here is the see something somewhat like this. I do not know whether this is the real picture. इसी को डिस्क्राइब किया था शैली के फ्रेंड ने या नहीं, आई डोंट नो, बट I found this picture of Ozymandias on internet, so perhaps this is the description that he has given us. आप देख सकते हो कि जो है दो लेग्स जो है वो एक पेडिस्टल पे लगे हैं और जो है क्या है, जो हेड है वो ऑलरेडी नीचे गिर गया है एंड इट इज a bit broken, है ना, जगह जगह से टूट गया है। So this is the site that was described by the friend of Shelley. And now all the romantic poets, they share this quality that they are very imaginative, है ना। मैंने आपको बताया था कि उनका जो एक कॉमन ट्रेट है सारे रोमांटिक पोएट्स का, वो क्या है, दैट दे आर वेरी इमेजिनेटिव। उनका इमेजिनेशन जो है वो क्या है, बहुत शार्प होता था। और जैसे ही जो है उसके फ्रेंड ने ये डिस्क्राइब किया दिस सीन, वैसे ही जो है शैली ने उसको अपने माइंड में रिक्रिएट किया and some emotions came into him, some idea came into his brain, and he composed a poem on this broken statue of Ozymandias or um, king. What was his name? Rasmus II. ठीक है, so this is the context of the poem, this is the background of the poem. Now we will move on to the poem. Okay. So again, it is a sonnet, so it is composed of just 14 lines. P.V. Shelley, 1792 to 1822. He died very young. मैंने आप लोगों को बताया था when he was just 30 years. तभी जो है शैली की डेथ हो गई थी. So he could have created many more works, but then because of his untimely death, we could not benefit from his talent anymore. Okay, so what is the poem? I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survived, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal, these words appear. अब जो ये लाइन्स है ये क्या है, उस पेडिस्टल पे जो है उस स्टैचू के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है। यू कैन सी दैट इट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास. माय नेम इज Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty, and despair. This two-line inscription was written on the pedestal of the statue of King Ozymandias. जो pedestal है जिसपे की statue placed है King Ozymandias की, उस पे क्या लिखा है, ये दो lines लिखी हैं. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, vast and bare, the lone and level sands stretch far away. Okay, so okay. So first line is very simple to understand. I met a traveler from an antique land. मैंने आपको बताया कि traveler कौन होता है, person who keeps on traveling from one place to another.
Now see, this is we are talking about the 19th century. Hmm? आप देख रहे हो 1792 to 1822. So at that time traveling was not very frequent, है ना. उस समय जो है बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो इधर उधर घूमने जाते थे. बिकॉज इट वॉज नॉट वेरी कन्वीनियंट. बहुत कन्वीनियंट नहीं होता था कि आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाओ. सो हमने फर्स्ट ईयर में, अच्छा आप लोग तो न्यू सिलेबस वाले हो. सो ट्रैवलॉग्स वर रिटन. उस टाइम जो है क्या पॉपुलर थी, जो लोग घूम के आते थे वो लोग जो है, जो भी उन्होंने साइट्स देखी, द काइंड ऑफ पीपल दे मेट, द काइंड ऑफ वेजिटेशन दे सॉ, द काइंड ऑफ एनिमल्स दे एनकाउंटर्ड, दे यूज्ड टू राइट ट्रैवलॉग्स. बुक्स लिखते थे जिसमें वो क्या लिखते थे कि जो है उन्होंने वो जहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर वो अफ्रीका गए तो जो उन्होंने अफ्रीका में कैसे लोग देखे, वहाँ का कल्चर कैसा है, और व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे मेट, कैसे पेड़ पौधे हैं, कैसा वेजिटेशन है, कैसे एनिमल्स हैं, कैसे फॉरेस्ट हैं. So travelogues were very popular at that time because a normal average common person cannot, it was not possible for a common person to travel from one place to another. So they enjoyed reading about travel. जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह घूम सको, तो आप क्या करते हो कि आप, अगर आपको किसी जगह पे में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में बुक्स पढ़ोगे, है ना. तो एट दैट टाइम popular because traveling was not something very common among people. Okay, so therefore when Shelley's friend came back, उसने क्या किया, पूरा शैली को सुनाया कि जो उसने वहां पे क्या क्या देखा. So I met a traveler from an antique land who said, okay, this is why I was confused. Now, this whole poem is an account of what the traveler said. It is written in second person. Hmm? क्या है ये, जो ये पूरा लिखा गया है. अब क्या है, जो भी उसके फ्रेंड ने, शैली के फ्रेंड ने, जो कि एक ट्रैवलर है, उसने जो है उसके बारे में क्या बताया स्टैचू के बारे में, वो कोट किया गया है. इट इज रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स. दैट मीन्स दैट इट इज अ रिपोर्टेड स्पीच, है ना. कि जो भी फ्रेंड बोल रहा है, अब आप वो पढ़ोगे. Two vast and trunkless legs of stone. Two vast. Vast मतलब huge, very big. Two very huge, large, big, trunkless legs of stone. Trunkless मतलब in which there is no body, there are just the legs. Stand in the desert. दो जो है वो पैर हैं जो कि बहुत बड़े हैं. वो कहाँ है, एक डेजर्ट में, बीच में आपको दिखेंगे. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies. और वहीं पे पास में सैंड में हाफ संक. संक मतलब दबा हुआ, आधा दबा हुआ क्या है, a shattered visage lies. Visage मतलब face. So that head, the toppled head of the statue is um, half sunk near the two legs. वहीं पे पास में जो क्या है, हेड है, और वो क्या हो चुका है, आधा सैंड में दब चुका है. Now he is going to describe the expression that is on the face that is half sunk, है ना. अब जो है क्या कर रहा है पोएट, वो डिस्क्राइब, ट्रैवलर जो है वो क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो फेस आपको सैंड में दबा हुआ दिख रहा है, उसके फेस पे कैसे एक्सप्रेशंस हैं. Whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command. So what are the expressions on the face of this person? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And do take some text also, है ना? Okay.
So what are the expressions on the face of the statue? जो हेड नीचे गिर चुका है स्टैचू का, वो कभी एक बहुत ही ग्रैंड स्टैचू का पार्ट हुआ करता था, उसमें कैसे एक्सप्रेशंस है? फ्राउन। फ्राउन क्या होता है? व्हाट इज फ्राउन? फ्राउनिंग फेस, it is not a happy face, ठीक है? You will find a seriousness on the face. ऐसा है एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? सीरियस एक्सप्रेशन है, and maybe with a hint of a bit of anger. He is a king, ठीक है? ये जो वो है स्टैचू है वो किसका है? एक किंग का है. So you can imagine a king who is very arrogant, जो कि बहुत पावरफुल है, एरोगेंट है, और जिसने कि बहुत सारे दूसरे जो है सिटीज को, दूसरे किंग्स को डिफीट किया है. सो ही हैज दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट इन हिम कि ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन अर्थ. आप एक ऐसा इंसान इमेजिन कर सकते हो जो कि बहुत ही एम्बिशियस है, जिसने अपने आसपास के जितने भी किंग्स हैं उनको वो डिफीट कर चुका है, और इसीलिए क्या है वो ही स्मग. स्मग भी आप नहीं समझोगे, एरोगेंट, ठीक है? सो his face is, the expression on the face is serious with maybe a hint of anger in it. And wrinkled lip, wrinkled lip मतलब जो उसके lips हैं, you can see the lines on them. That indicates the toughness of character. He is a person who has been engaged into wars, और इसीलिए जो वो जो ये ड्राई हवा चलती है डेजर्ट से, डेजर्ट में, उससे क्या हो गया? उसके लिप्स जो है वो रिंकल हो गए हैं, ठीक है? सो दैट शोज दैट ही इज अ मैन ऑफ एक्शन. ही इज नॉट अ किंग हु एंजॉयज लिविंग इन हिज कैसल. वैसा वाला किंग नहीं है वो, कि वो जिसको जो है अपने महल में बैठ के और जो है सारे कंफर्ट्स के साथ रहने की आदत है. ऐसा किंग नहीं है वो. कैसा किंग है? जो कि पूरे टाइम जो है बैटल्स में एंगेज रहता है. वो खुद जो है जब भी लड़ाई होती है कहीं पे तो वो खुद जाता है ना? सो ही इज अ मैन ऑफ एक्शन. ही इज एम्बिशियस, ही इज एरोगेंट, एंड which can be seen on, all these things can be seen, can be discerned from the expression that the sculptor has given to the statue, ठीक है? And sneer of cold command, there is coldness in his face. He is a killer, है ना? जो बैटल फील्ड्स में जाते हैं, जो बैटल ग्राउंड्स में जाते हैं, वो क्या करते हैं? बेसिकली आप बैटल कैसे जीतते हो? लोगों को मार के, है ना? एंड देन यू हैव टू कमांड ऑल द आर्मी. तो आप जो है स्माइल करके बैटल्स जो है वो विन नहीं कर सकते, या लोगों को कमांड नहीं कर सकते. यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी डोमिनेटिंग. तो जो डोमिनेटिंग वाला जो कैरेक्टर है, दैट कैन ऑल्सो बी सीन और थ्रू हिज एक्सप्रेशन, थ्रू द एक्सप्रेशन दैट इज देयर ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू, ठीक है? तो कुल मिला के आप जब फेस को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये किसी किंग का फेस है. Tell that its sculptor well those passions bred, which yet survive, stamped on these lifeless things. Okay, so the face tells that the sculptor मतलब जिसने की स्टैचू बनाई है ना? स्टैचू को हम क्या कहते हैं? स्कल्पचर. और जो स्कल्पचर बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्कल्प्टर. ठीक है? सो नाउ द traveler is talking about the person who carved this statue. जो भी है, जिसने भी स्टैचू बनाई किंग की, ही रेड हिज पैशंस वेल. वो किंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और इसीलिए जो है जो सारे एक्सप्रेशंस उसने फेस पे बनाए वो इतने अच्छे से आए हैं. Which yet survived, stamped on these lifeless things. ठीक है? Now the king is dead, the sculptor is dead, लेकिन जो expressions हैं king के वो अभी भी उसके face पे survive कर रहे हैं. The hand that mocked them and the heart that fed. So the poet here is saying that both the sculptor and the king, they are dead,
but the expressions that the sculptor imparted to the statue, it is still alive. And on the pedestal, these words appear. So finally, we come to the point where the uh, traveler tells us कि what is inscribed on the pedestal, कि pedestal पे क्या लिखा है. माई नेम इज ऑजिमैंडियास किंग ऑफ किंग्स. ऐसा होता है ना, जिसकी भी स्टैचू होती है एक, या तो अब हमारे यहाँ वो होता है कि प्लेट लगा देते हैं. प्लेट मतलब एक स्टील की कोई छोटी सी प्लेट लगाते हैं और उस पर लिख देते हैं दिस पर्सन, नाम लिखा, फिर फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, और जो भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है. अगर आप म्यूजियम्स में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जनरली अगर किसी की स्टैचू डिस्प्ले होती है तो यही पैटर्न होता है कि जो है आप द नेम ऑफ द पर्सन, देन द life period, जितने भी time period he survived, and also his major achievements. So somewhat like this, there was an inscription on the pedestal of the statue, and it read, "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair." Uh, okay. So जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या है? माई नेम इज ऑजिमैंडियास. जो किंग है, जो स्टैचू है, उसके नीचे क्या लिखा है कि मेरा नाम क्या है? ऑजिमैंडियस, एंड आई एम किंग ऑफ किंग्स. आई एम द मोस्ट पावरफुल किंग. So what is written? I am Ozymandias, I am king of kings, meaning I am the most powerful king. Look on my works, ye mighty, and despair. Okay, now the second line is very ironic, and this is the whole point of writing this poem. अब जो second line लिखी है वो क्या है? Look on my works. मेरे जो है काम को देखो. And despair. डिस्पेयर मतलब और दुखी हो कि तुम अपनी लाइफ में जो है कुछ भी नहीं कर पाए. ठीक है. तो देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑजिमैंडियस वाज अलाइव, जहां पे कि उसकी स्टैचू है, उसके पीछे पूरी सिटी थी. उस स्टैचू के पीछे क्या था? पूरी सिटी थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स थे. एंड पीपल यूज्ड टू एडमायर दीज मॉन्यूमेंट्स व्हेन दे केम देयर. ठीक है. तो ये ऑजिमैंडियस को अपनी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता था कि उसने इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स जो है वो बनवाई. बट इन प्रेजेंट टाइम नथिंग इज लेफ्ट. अब जब प्रेजेंट में हम वहां जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचा. और क्या बचा है? सिर्फ स्टैचू. तो जब स्टैचू के नीचे ये लिखा हुआ है कि जो है मेरा काम देखो, और जो है दुखी हो कि तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया, सो दैट साउंड्स वेरी आयरॉनिक. क्योंकि काम देखने को बचा ही नहीं. आप जो भी पढ़ेगा, द पर्सन विल फील सरप्राइज. आज अगर प्रेजेंट में उस इंस्क्रिप्शन को कोई पढ़ेगा तो उसको क्या होगा? सरप्राइज फील होगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं है. वो क्या दिखा रहा है? नथिंग डिसाइड रिमेन्स. ठीक है. तो उस मूर्ति के अलावा, जो मूर्ति भी टूटी हुई है, उसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है. बाउंडलेस एंड बेयर. जहां तक आप देखोगे देयर इज बैरननेस. बैरननेस मतलब कोई वेजिटेशन नहीं, सिर्फ क्या है? सैंड. द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे. फिर दूर दूर तक क्या है? देयर इज जस्ट सैंड एंड सैंड. ओके. So this is the poem. Coming to the theme of the poem. So, what do you think is the theme? What is the point of writing this poem?